डेटा मॉडल्स। जी हाँ, डेटाबेस में डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो कि यह दर्शाता है कि जो डेटाबेस है वो किस प्रकार से उन्हें डिज़ाइन किया गया है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उन्हें किस प्रकार से रिप्रेजेंट और एक्सेस किया जा सकता है। हम डिफिनेशन देख सकते हैं कि डेटा मॉडल इज़ अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ डेटा मे बी स्ट्रक्चर। ये एक डिस्क्रिप्शन होता है जो कि उसकी स्ट्रक्चर को explain करता है, how to represent it in access. A database model is a theory of specification describing how database is structured and can be used. Simple. It's a theory or specification about the database model. Types of database model. There are different types of database model जो कि देख सकते हैं आप, hierarchical model, network model, relational model, entity relational model and object oriented ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। डील करते हैं हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल को। इट इज़ ऑर्गेनाइज लाइक अ ट्री स्ट्रक्चर। हायरार्चिकल का मतलब होता है जिनमें ब्रांचेस हो, लाइक ट्री। अलाउ रिपीटिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। इसमें पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप आप देख सकते हैं। ईच पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रंस बट अ चाइल्ड विल हैव ओनली वन पेरेंट। प्रत्येक पेरेंट, जितने पेरेंट होंगे उनके एक से अधिक चिल्ड्रंस, ये उसके बोला जाए तो उसके डाउन में एक से अधिक चिल्ड्रन के रूप में अलग अलग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल यू कैन सी, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लाइक कस्टमर टेबल है। देन कस्टमर टेबल के अंतर्गत चेकिंग अकाउंट डेटा एंड उसके अंडर में ही ऑटो लोन डेटा। सो दीज आर द चाइल्ड data that is under parent data. So this is the structure of hierarchical database. Next देखते हैं, simple there is definition is employee has many children but child has only one parent. This is also a structure of hierarchical database. Next, network database model. Network database model, इसमें मल्टीपल पेरेंट और मल्टीपल चिल्ड्रंस रिकॉर्ड हो सकते हैं। लाइक देर इज़ नो सिंगल पेरेंट और सिंगल चिल्ड्रन, देर शुड बी मल्टीपल पेरेंट एंड मल्टीपल चिल्ड्रंस एंड इट्स मॉडलिंग मोर देन हायरार्चिकल मॉडल। नेटवर्क मॉडल में डिफरेंट रिलेशंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, इनके बीच एक इंटरफेस होता है जो कि शो करता है हायर कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट है रिलेशनल मॉडल। बेस्ड ऑन प्रेडिकेट लॉजिक एंड सेट थ्योरी इन्फोर्स्ड डेटाबेस इंटीग्रिटी। लाइक ये एक प्रेडिकेट लॉजिक या बोला जाए तो सेट ऑफ थ्योरी पर बेस्ड होता है। इनमें जो डेटा होते हैं वो डिफरेंट रिलेशनल अलजेब्रा से डिनोट किया जाता है। ये बोला जाता है एक्चुअली यहाँ पर रिलेशनल अलजेब्रा एक सेट ऑफ फार्मूले के रूप में होते हैं जिनका यूज़ हम टेबल नॉर्मलाइजेशन पे यूज़ किया जाता है, जिससे डिफरेंट ऑफ एक्सेस प्रोवाइड किया जा सकता है DBMS से। रिलेशनल मॉडल, relational database model, the basic building block of this model is data type, rows, column and values. There is the basic building block where data type, like different types of data it can contain. Rows, all the data is arranged in row and column like table, and this should accept the values. Row are called body and column are called heading. Entity relationship model, illustrate logical database. Same, it is called entity relation diagram also, that is used to model any procedure, any model, any like this. समझते हैं इसको। ऑब्जेक्ट रिलेशन डेटाबेस मॉडल जो कि नेक्स्ट है। रिलेशनल मॉडल बट अलाउज यूजर टू इंटीग्रेट a database with their own data types and methods. Mostly external software runs over a traditional database provide this functionality. Like polymorphism, inheritance, function overloading. This is all the functionality of object relational database, where we find this all the functionality with the database. Database system architecture, हम देखते हैं कि इसमें database architecture किन मेन चीज़ों पर डिपेंड करता है या उन्हें कितने पार्ट्स होते हैं। मेन फ्रेम डेटाबेस, तो both DBMS and application run on mainframe computer. It means that there should be a mainframe computer that run the DBMS. It is located, it is stated in a particular mainframe computer. It should be have a network access. It should access database and application using terminals. Terminals mean a system.
Personal database, both database DBMS and application run on user's workstation. It means that the both database should be run on the user's workstation also. Client and server database, these are the different architecture. In a client server database, there's database DBMS run on central server, application run on users client workstation. It means that there is central server that hold the DBMS, runs the DBMS, but the user where he use in his workstation, the application run on his workstations. Advantage of client server database: handling server and client failures, processing transactions, handling high data volumes, providing security, servicing multiple simultaneous users. It means there is lots of benefits, advantage. इसमें हाई वॉल्यूम डेटा को हैंडल करना आसान है, प्रोवाइडिंग इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की होती है, एंड इट कैन सर्विस मल्टीपल यूजर्स आल्सो simultaneously. So we will now stop this lecture. We have discussed about the data models and their architectures and their benefits also. We will discuss more about the DBMS next session. Thank you.